We are going to talk about what is international relation IR and what is a nation state. Very briefly speaking, international relations क्या हैं? This is the relations between states. What are the driving forces? What make a nation or a state to develop relations with others? What are the driving forces? There are mainly two driving forces और यही फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स काउंट होते हैं. एक ये कि दे वांट टू मेक देमसेल्फ सिक्योर, इनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स सिक्योर. दूसरी, इकोनॉमिक वेलबींग. पीपल लिविंग इन द बाउंड्रीज, दे मस्ट बी फुलफिलिंग देयर वांट्स एंड नीड्स कंफर्टेबली. जो भी गवर्नेंस मॉडल होता है स्टेट का, वो इन्हीं दो चीजों को पेश नजर रखता है. स्टेट शुड बी सिक्योर एंड द पीपल शुड बी वेल ऑफ. इसके लिए वो दुनिया से ट्रेड भी करते हैं, दुनिया से रिलेशनशिप करते हैं, चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज को अपने दोस्त बनाते हैं. एंड पाकिस्तान डिड दैट. इन द अर्ली इयर्स ऑफ अवर हिस्ट्री we entered into Santo Mutual Defense Agreement with the United States because the United States was the more powerful country of that time. And what made the United States to become part of this alliance? It has its own national interests and the driving forces, because at that time, communism was a great obsession with the United States. There was Cold War going on between United States on one side, USSR on the other side, and to some extent, China was considered its rival on account of the communist system. Since Pakistan was in the vicinity of these two countries, Pakistan was altogether contiguous with China and it was not far away from the USSR. Therefore, the United States wanted to be stationed here in this country. And since we were under an obsession or the sense of insecurity was prevailing because of India, because in the very first year of our independence, we entered into a war with India, and India was 7 times larger than us. This sense of insecurity which was prevailing with us, that forced us to seek some support from a powerful country. And we entered into an alliance with the United States and we got a lot of aid and military equipment from the United States. ये चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हम डिस्कस करते हैं. और दूसरी चीज, नेशन स्टेट क्या होती है? तो नेशन स्टेट हम जैसे कहते हैं, ये ऐसी स्टेट होती है जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर उसकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की जो आइडियोलॉजी है या सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो एक होती है, उनकी वैल्यूज, इनके ऑब्जेक्टिव्स, एक हार्मनी होती है उनमें. ये चीजें उनको इकट्ठा करती है. जैसे पाकिस्तान को इसकी आइडियोलॉजी ने, बीइंग इस्लामिक आइडियोलॉजी, दैट मेड देम टुगेदर. They may be speaking different languages, belonging to different racial stocks, but they got together because of the ideology. The most important thing is the ideology. दूसरा ये है कि हम कहते हैं कि यूएनओ की वो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है और उनका एक गवर्नेंस मॉडल और सिस्टम होता है. ये सारी चीजें जहां जमा हो जाएं उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं. तो पाकिस्तान इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए नेशन स्टेट. लेकिन नेशन स्टेट को वीकन क्या चीज करती है? वीकन ये करती है कि जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स हैं, प्रोविंसेस हैं, अगर कोई प्रोविंस या कोई रीजन प्रीडोमिनेंट इस तरह हो जाए कि दूसरे फील करें कि देयर राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड और सेंस ऑफ डेप्रिवेशन स्टार्ट प्रिवेलिंग, तो दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. दुनिया में फिर ऑटोनॉमी की मूवमेंट चलती है. स्पेन में जो इतनी बड़ी एम्पीरियलिस्ट पावर था, वहां कैटालोनिया जो रीजन है उसमें सेपरेशन की मूवमेंट चल पड़ी और उसकी पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस का ऐलान तक कर दिया. बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस किया. सेम काइंड ऑफ मूवमेंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड किंगडम. स्कॉटलैंड ने कहा मुझे आजाद कर दो एंड फाइनली रेफरेंडम होता है. चूंकि वोट 48% ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए मिले, इसलिए वो आजाद नहीं हुआ. एंड लाइकवाइज नॉर्दर्न आयरलैंड जो उसका एक टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम का, दे आल्सो वांट टू सेपरेट, बट स्टिल द मेजॉरिटी वांट्स टू लिव विद द यूके. सिंस इट्स ए डेमोक्रेसी व्हिच प्रिवेल्स देयर, तो इस वजह से वो अभी यूनाइटेड किंगडम है, उसकी चारों टेरिटरी इकट्ठी से. लेकिन
पॉइंट ये है, to keep the state stable and strong, you have to take care of the constituent regions, territories or the provinces. उनमें sense of deprivation को खत्म करना होता है. That means consolidating a nation state.